Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Gopi Jana Vallabha Girvaradhari. Jai Gopi Jana Vallabha Girvaradhari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivastava Bhaktavrinda. Hare Krishna
Nitai Gauranga Gaura Hari Jai Satchinandana Jai Satchinandana Jai Satchinandana Gaura Hari Jai Gaur Hari Gaur Hari Gaur Hari Gaur Jai Gaur Hari Gaur Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की भगवद गीता की जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा माता की और प्रेमानंदी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदन्तिकं वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सहगजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधाकांता नमस्तुते तत्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावने भयो वैष्णव भयो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. So welcome you again to today's Sunday folk program. So I'm gonna read from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 1. What is the title of chapter 1? Anybody knows the title of chapter 1? Questions by the sages. We had already discussed this. See, this Bhagavatam was first told by Sukadeva Goswami to Parikshit. Now this one is when Sutta Goswami now will recite it for the sages whose leader is Saunak Rishi. This is being done in Naimisaranya. Who has been to Naimisaranya? Anybody of you? Huh? Naimisaranya is the center of the earth. There's a big well there, nobody has found the end. This is the center. And besides it, they had this discussion about the religion. I've been there. But still some people, even people there, they don't follow what is in the Bhagavatam. Because I went there, they had a big place for, Havan sacrifice. So I asked the guy, this in the Bhagavatam is written that this is not for the Kali Yuga. Why performing this yagna here? So Vishwanath stopped me and said, don't fuss with them. So there's a place. So many rishis gathered there, and of which Saunak Rishi was the leader.
So, before we ask question, or before you want to learn from somebody, a spiritual master or senior devotees, the process is that Krishna says in Bhagavad Gita, tad vidhi paripatena. You have to surrender. You have to become very humble. Then you can understand what the devotee or the spiritual master is saying. If you are not humble, then very hard to understand. So, Sutta Goswami, representing the rishis, was very humble. And because, he said, because you are submissive, your spiritual masters have endowed you with all the favors bestowed upon the gentle disciple. Therefore, you can tell us all that we have scientifically learned from them. So, if we are humble, we can learn from our seniors and from our spiritual master. So, in this, the first question they ask, anybody can remember? We discussed about the 6 questions. The first question they ask is, please, therefore, being blessed with many ears, explain to us in an easily understandable way what you have ascertained to be the absolute and ultimate good for the people in general. So the first question they ask Sutta Goswami is to tell them what is the absolute and ultimate good for the people in general. This is the quality of the devotees. The devotees want to benefit everybody, good for everybody. They want, sometimes when Hare Krishna go to preach, people think that Hare Krishna want to get the people on the side. No, it's not that. We want to take you out from the darkness so that you can see for yourself how you look like, what your activities are. Otherwise in the dark you don't know what is to be done and what is not to be done. So in the purport, Prabhupada says, in Bhagavad Gita, worship of the Acharya is recommended. The Acharyas and Goswamis are always absorbed in the thought of well-being of the general public, especially their spiritual well-being. So, first thing, the Goswamis are worried about the spiritual well-being of the general public. They are not worried about the material side of, because once your spiritual is okay, then material will automatically be okay. This is the trick of the trade. Sometimes we think that, we fix our material side, then we go to the spiritual. No. You try and fix your spiritual process, material will just come. Just like we make the sugar mill. The sugar mill is made to, make sugar. Right or wrong? But side by side, the molasses comes out. So sugar mill is not made for molasses. But side by side, molasses is made. And you can make some money from the molasses too. So similarly, when we try to develop spiritually, the material things will be just like a byproduct. It's like molasses is a byproduct. So material advancement will be just like byproduct. That's why in other verses of the Bhagavatam, 2:110, Sutta Goswami says, Akam sarvo kamava moksha kam udardi tivrena bhakti yogena yetet purusha param. Akam means you have, if you have no desire, akam means no desire. Or sarvo kamava, or many desires. Or you have desire for mukti, moksha kam udardi. Says all these things will be taken care, tivrena bhakti yogena, if you do devotional service. So the Bhagavatam talks about devotional service. See, when Vyas was dissatisfied after writing the 17 Puranas, he met his guru, Narad. And Narad told him that because you have not written about devotional service directly, that's why you are dissatisfied. Similarly, if we don't do devotional service, no matter what money we make, we won't be satisfied. Nobody is satisfied with money. They say money is sweeter than honey. But nobody is satisfied. People make money, they keep on making money, keep on making. You can never be satisfied.
That's why in America there's so much money, but some people are sick of this mental disease. India there is no money, but nobody is mentally sick. They sleep on the road, they are still not mentally sick. They know Thakur dekhega humko. Thakur will take care. This is the faith we should have. That Thakur will take care. The time is very short. Time is very short. So the Goswamis, they look after the spiritual well-being. And he says spiritual well-being is automatically followed by material well-being. The Acharyas therefore give directions in spiritual well-being for people in general. Foreseeing the incompetence of the people in this age of Kali or the age of coral, the sages requested that Sutta Goswami give the summary of all revealed scriptures, because the people of this age are condemned in every respect. The sages therefore inquired of the absolute good, which is ultimate good for the people. The condemned state of affairs of the people of this age is described as follows. तो एज की कौन सी कंडीशन है? नेक्स्ट वर्स में बतावे, प्रायना एना अल्पस्यु सभ्या कलौ अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मत्यो मद भाग्या ही उपादितु. O learned one, in this iron age of Kali, men have but short lives. They are quarrelsome, lazy, misguided, unlucky, and above all, always disturbed. So in this age people are have short lives. Why people have short lives in this age? In this age people should live about 100 years. But why they have short lives? Prabhupada gives in the 6th canto, chapter 2, verse 23, purport. He says, Papista ya durachar dev brahmana indika apat bhojana tesam akal marnam durvam. Akal marnam durvam means untimely death is sure because of these things. Papista. When you are sinful, your age is reduced. So everybody is sinful, especially nobody follows these four regular principles. They kill animals, illicit connection with man and woman, drinking, not drinking water, alcohol, and grog, and then gambling and all these things. People lose a lot of money in gambling. So all these things make short lives. Papista, durachar, bad habits. Wake up after the sunrise is a bad habit. You should wake up before sunrise. Even when we were not devotees, our mother will never let us sleep after 5 in the morning. We have to wake up, go and milk the cows. That was our habit. So olden days people knew you should wake up before sunrise. Papista durachar, dev brahmanidika, not following the brahmanas and demigods. Apat bhojanas. Apat bhojanas means eating whatever you get. All the junk food, not offering. So because of all these things, you have short lives in Kali Yuga. And they are quarrelsome, like Ukraine and Russia, very quarrelsome. So many people dying, and the aim is nothing, there is no aim why they are fighting. They are thinking that, Ukraine will join NATO, so NATO will come near to Russia, so will be in problems. So before they join, we kill them. We take, Ukraine. So small things, they are quarrelsome. And people are lazy. From here you go to Vusia, all the roadside is jungle, no plantations, no cassava, no dal, nothing. No even, not all reserve. Even people, they have their own backyards, they don't plant anything. They are lazy. Lazy. Even you give them land, they can't plant. Their only excuse is reserve.
Huh? This is only excuse. Nobody wants to do hard work now. Huh? I remember our time when we were young, schooling, high school, or even walking. When we started to walk, we used to walk in government, and 5 days we used to walk. That was our holiday. Then weekend we go back to the farm, and Saturday, Sunday we have to work hard on the farm. So these 2 days was our real work for us. Working for government was just holiday. I think it's changed a little bit now, but those days were very easy. Huh? Yeah, little bit changes there. But our time very easy. You can even sneak from the office, go and see the cinema. Huh? So we're very lazy. Misguided. So misguided means that if a person tells you something, you don't want to listen to him. If somebody wants to tell you wrong thing, you follow him. Huh? This is misguided. You don't want to take the right guidance. This is misguided. Most people will want to follow the Brahmanas, so-called Brahmanas who don't know anything. When the Hare Krishna tell us something, they don't want to. They think this is a new religion or this Hari Bol saying something. And as such they become unlucky. And above all, always disturbed. People are always disturbed. Some problem. So Prabhupada says, the devotees of the Lord are always anxious for the spiritual improvement of the general public. Devotees are very anxious to see that all the general public are develop in, have improved, make improvement in general, spiritual life. That's why we have Sunday programs for public. We do Harinam, so the people listen, we distribute books. So devotees they want to see that everybody develops spiritually. When the sages of Naimisarya analyze the state affairs of the people in this age of Kali, they foreshow that man would live short lives. So they knew that man would live short lives. In Kali Yuga, the duration of life is shortened not so much because of insufficient food, but because of irregular habits. So life is not shortened because of less food. Life is shortened because of more food. You have heavy lunch, and then again ready for the dinner. By keeping regular habits and eating simple food, any man can maintain his health. Overeating, over sense gratification, over dependence on another's mercy, and artificial standards of living sap the very vitality of human energy. So overeating is no good. Sense gratification. In fact, we have come here because of sense gratification. We have come to this material world because of sense gratification. Manasasthani indriyani prakriti sthani karsati. Because of mind and senses, we are struggling. Karsati means struggling in this material world. The people in this age are also very lazy, not only materially, but in the matter of self-realization. So people materially भी lazy है और self-realization बताओ उसमें भी lazy है. माला नहीं करे मांगे, भागवतम नहीं पढ़े मांगे, भाव गीता नहीं पढ़े मांगे. इसमें self-realization भी lazy है. That's why Lord says, out of thousands among human beings, one will endeavor for perfection. कलयुग में इतना खराब हालत है. Out of thousands, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यति सिद्धे. एततामपि सिद्धानां कश्चित् मां तत्वता. That out of thousands, one will endeavor. So Hare Krishna, what Hare Krishna do? We are looking for that one out of 1,000. Right or wrong? So sometimes we get somebody who wants to join us. Okay, come. Otherwise, very hard. We don't expect that everybody will just follow us. No, because they are lazy, even in the matter of self-realization. The human life is specially meant for self-realization. That is to say, man should come to know what he is, what the world is, and what the supreme truth is. Human life is a means by which the living entity can end all the miseries of hard struggle for life in the material existence, and by which he can return to Godhead, his eternal home. So human life is meant to return. So when we get a human life, these four things we should know. We should inquire, who is God?
Who are we, spirit soul? What is our duty towards the Lord? And where we are destined to go after death. These four things we should remember all the time. Who is God? Who are we? This body, we are spirit soul, part and parcel of the Lord. What is our duty, relationship with the Lord? We are servant. We have forgotten the relationship. And we should also know where we want to go after leaving this body. So these four things we must know. Everybody should try and find out. People don't know who is God. People say so many gods. But there is only one God. Who is that? Krishna. Then how about Ram? Who is Ram? Who is Vaman? How can you relate these avatars with the Supreme Person? They are His part and parcels. Ram adi murtesu kala menatistam nana avatar akrot bhins kintu Krishna swapi. Ram etc. are his expansions and expansions of expansions. But Krishna is the original personality of God. So there's another question which the sages ask. Why did Krishna have to come himself to this material world? That we can discuss later. He could have sent his incarnations, but he came himself. There's another question. In the sixth question, there's also a question. Why did Krishna have to come himself? But due to the bad system of education, men have no desire for self-realization. Even if they come to know about it, they unfortunately become victims of misguided teachers. So even the teachers are, in one school, Amorila was saying, the teacher called one boy, do you believe in God? The boy said, yes, I believe in God. Can you show me your God? He said, no, I cannot show. I cannot see. So, then he asked, are you going to sit down? And anybody else who believes in God? Another boy said, I believe in God. Can you see God? He said, no, I can't see. But there is God. So the third boy also put his hand up. He said, I want to ask some questions. I want to ask these people, these boys, they could not see God. Can you see the mind of your teacher? He said, no, I can't see. So that means your teacher has no mind, no brain. Because you believe whatever you see. So you cannot see your teacher's brain, so teacher has no brain. So you can prove always against the teachers. It's not that you only see what you believe. You believe what you see. Certain things we have to see through the eyes of the scriptures. Sas Chaksu. The scriptures say we have to believe. Right or wrong? In this age, men are victims of not only different political creeds and parties, but also of many different types of sense gratifying divisions, such as cinemas, sports, gambling, clubs, mundane libraries and association, smoking, drinking, cheating, pilfering, bickering, and so on. So Prabhupada has given here what are other things that because of which we cannot do devotional service. Is the sense gratification. We try to make sense gratification. So as soon as we try to make sense gratification and material opulence, then we cannot understand God. Then our brain, our intelligence is lost. Bhagavad Gita 2:44 Krishna says, Bhog Aishwarya Prasaktanam to Apita Chesam. People who desire sense enjoyment and material opulence, their intelligence is lost. Samadhauna, they are not interested in self-realization. So these are once we are also like them, then we won't be interested. We might be initiated. We might be hanging our beads all the time in the neck. But our interest is not there. That's why, because of that, what we do, we go to cinemas. Prabhupada is against cinemas.
Cinemas means you are not interested in the self-realization. Prabhupada got so many books. We read that books, it is more interesting than going and looking at the cinema. Huh? Sports. Devotees never go to sports. Huh? No rugby sevens. Huh? You don't go to a sports field, ground. Gambling, clubs, mundane libraries, bad association, smoking, drinking, cheating. Even cheating, we should not do any cheating, even among devotees, no cheating. Pilfering, bickering, and so on. Their minds are always disturbed and full of anxieties due to so many different engagements. Mind disturbed हो जाए. अभी तुम जाएगा स्पोर्ट्स फील्ड में, अब तुम्हारी टीम हार गई तो माइंड डिस्टर्ब हो जाए. हैं? है कि नहीं? In this age, many unscrupulous men manufacture their own religious faiths which are not based on any revealed scriptures. आदमी लोग अपन धर्म बना ले, own religion. And very often people who are addicted to sense gratification are attracted by such institutions. तो sense gratification के मारे इन लोग के बात सुनी लोग. Consequently, in the name of religion, so many sinful acts are being carried on that the people in general have neither peace of mind nor health of body. The student brahmacharya committees are no longer being maintained, and householders do not observe the rules and regulations of the grastha ashram. तो ब्रह्मचारी लोग भी नहीं रहे हैं और ग्रस्ता लोग भी कि आश्रम खत्म लगभग. Consequently, the so-called vanaprasthas and sannyasis who come out of such grastha ashrams are easily deviated from the rigid path. In the Kali Yuga, the whole atmosphere is surcharged with faithlessness. Men are no longer interested in spiritual value. So Kali Yuga में कोई spiritual value में interested नहीं है. Nobody is interested. So we have a hard job. Prabhupada had a hard job by making this organization, at least trying to get some people in. But in Kali Yuga, it's very hard for people to follow. And they won't come near you. Even sometimes we try to follow alone at home. All the families don't like it, They'll tease you. It's very hard. मैं बड़ा साधु बन गए बोले. सौ चूहा खा के बिल्ली हज करे चली बोले. बोले कि नहीं सबके, हमें तो बोल ही नहीं रहा पहले. बोले यही तो रहा बोले पहले यहाँ दारू पिए तरह बोले. पर कृष्णा कौन सी बोले सब प्रजा माम एकम शरण मजा हम तो सर्वे पापी भयो. When you surrender to Krishna, he takes away all the sins. और वैसे भागवतम में लास्ट श्लोक कौन सी बोले? When you do congregation chanting, all your sins are gone, and all your miseries are gone too. Your sins and miseries go away when you do congregation chanting. Chanting in congregation, you chant, all the sins and miseries go. You feel happy. At the end, you get the chop suey and rice. So that's happiness. As everybody was happy. When they were walking, they saw a very hot sun, hot sun. When they came here to Ramdu's house, everybody was smiling. For the maintenance of such material civilization, man has formed complex nations and communities, and there is constant strain of hot and cold wars between these different groups. आदमी कितना देश अभी हम लोग सुनता है कितना बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खाली अपन मिलिट्री के वास्ते देवे. बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स. हम लोग फिजी के बजट है बहुत हाईएस्ट बजट हम लोग गए 4 बिलियन, उससे ऊपर नहीं गए. और हुआ तो बिलियंस एंड ट्रिलियंस लोग देवे खाली आर्मी के वास्ते. एक साधु बोलता है राम के जो आर्मी रहा, राम के आर्मी है नो कॉस्ट. बंदर लोग कोई यूनिफॉर्म की जरूरी नहीं रहा, कोई खाना जरूरी नहीं, पेड़ को फल फूल के खा ले, कोई अकोमोडेशन जरूरी नहीं. इज नो कॉस्ट बजट, नो बजट एट ऑल फॉर राम्स आर्मी. इतना बड़ी लड़ाई करीस. अभी के आर्मी लोग बड़का बड़का बजट मांगे. राम के टाइम नो बजट.
है, ब्रिज बना दी विदाउट एनी बजट। हाँ, अभी छोटा ब्रिज के वास्ते कितना $1 मिलियन मांगे छोटा ब्रिज बनावे। तो स्पिरिचुअल में डिफरेंट है बहुत, और मटेरियल काम और स्पिरिचुअल काम बहुत डिफरेंट है। मटेरियल काम में जैसे गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर का काम करेगा तो बजट बनाए कि इतना हम रोड में देगा, इतना हेल्थ के, इतना एजुकेशन के, तो उतना उतना देवे सबके, राइट, इतना और पीपल पेंशन। स्पिरिचुअल में यू डोंट हैव टू मेक अ बजट, यू जस्ट डू द प्रोजेक्ट, कृष्णा विल प्रोवाइड द मनी। ऐसे है स्पिरिचुअल में, बजट नहीं बनाना जरूरी है। पर ऊपर जाके से मंदिर खरीद ले और डिवोटी लोग पैसा भरे, तो एक टाइम बहुत खरीद कर जाओगे तो डिवोटी लोग बोले प्रभुपाद जी कैसे भरा ही सब, बोले प्रभुपाद बोले किसके टेम्पल है, बोले कृष्णा के, बोले लेट हिम वरी, बोले जिसके टेम्पल उसके वरी करन दो, बोले। एंड आई हैव एक्सपीरियंस, आई वाज प्रेसिडेंट फॉर सुबह टेम्पल फॉर अबाउट 15 years, देयर वाज नो फाइनेंस प्रॉब्लम। देखो कृष्णा गीता में लिखा है, वेयर इज कृष्णा देयर इज ऑपुलेंस, विक्ट्री एंड फेम। कृष्णा रही तो ऑपुलेंस रही है, ऐसे नहीं कि ऑपुलेंस नहीं रही, वेयर कृष्णा देयर इज ऑपुलेंस। ऐसे वर्क करे। हम कहते हैं सन्यासी लोग कोई नौकरी नहीं करे, पूरा दुनिया घूमे, प्रभुपाद 12 राउंड करीज राउंड द वर्ल्ड, 12 ट्रिप्स अराउंड द वर्ल्ड विथ 40 रुपीज, हम 8 टेम्पल्स बनाइस, कृष्णा प्रोवाइड करीस। ऐसे हम लोग नहीं करेंगे, पैसा बटोरो तब कुछ काम करो पैसा आ जाएगी। हमारा एक्सपीरियंस सुबह टेम्पल में है, हम लोग सुबह टेम्पल जब शुरू करा बनावे के, वी हैड अबाउट 490,000, तो टेम्पल के कॉस्ट बताइए, बोले अबाउट 1 मिलियन, आश्रम और मिला एक अनदर 2 मिलियन जमीन के सब। तो हम लोग बोला चलो शुरू करो, टेम्पल बना लो, वही थोड़ा छोटा ला 3 के 6 के शेड खाना बना ले, कोई टेम्पल में बांट दे, कोई खाना खाइए सब, कोई टेम्पल बना दो। जैसे शुरू करागे पैसा आएगा, सब फ्री बन गए। कसा पे दी 500,000, बोले आश्रम बना दो, हॉल बना दो। लोग का टेम्पल 500,000, बोले टेम्पल बनवाई मिस करो, हैं। हम लोग रेस्टोरेंट चला, रेस्टोरेंट से अबाउट 1 मिलियन आएंगे। तो जैसे शुरू कर सब बन गए, 3 साल में सब फ्री हो गए, कोई बजट बनाया कि नहीं पड़ा। और हम लोग डोनेशन बाहर बहुत कमती मांगा, अभी हम लोग वैसा डोनेशन नहीं मांगता, घर जा 5 लाख रसीद बनाओ, नो, वो तो कॉस्ट हो गया, 5 लाख जैसे तो कॉस्ट हो गया, मोटर लेके जाओ वहाँ खड़ा रहो, रसीद बनाओ कॉस्ट बेनिफिट हम लोग को करा थी, बहुत कॉस्ट है उसमें, जाओ घर घर जाओ। ऐसे है, हरे कृष्णा में पैसा कमती नहीं है, आप नहीं लोग सब देवे। अरे वो पहले कोई टेम्पल में बीमार पड़े और वैसे ट्रीटमेंट मांगे, तो आई टू गो टू ऑल द रिच डिवोटीज, राइट 1,000 ईच, 10,000 कॉस्ट है, 10 डिवोटी है 1,000 तो खलास। उसकी जाके वहाँ डीओ के लगे कागज नहीं लिखावे कि हम जाके भीख मांगेगा, नो, बन जाए, इजी है, बन जाए, पैसा रहे सबके लगे, है कि नहीं। इवन हरे कृष्णा में सिस्टम है, हम लोग फॉलो नहीं करता अभी कि कोई कहेगा कि डेथ रहे, इवन डेथ दिया, द टेम्पल प्रेसिडेंट शुड फेस गो एंड अरेंज फॉर अ मीटिंग, टेम्पल प्रेसिडेंट शुड अरेंज कौन लकड़ी लाई, कौन सब कागज पत्र का काम सेट करी है, कौन जी बॉडी नवाक लाई, सब अरेंज, कौन पंडित रही, ये टेम्पल प्रेसिडेंट काम है, सब घर ला काम कुछ नहीं है, कृष्णा सब अरेंज करी। घर ला काम हंसो खाली बैठ के, कोई बात नहीं, मर गई है ना, जा रहे हैं। तो ये का बिकॉज ये जो ना ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे माता जी का बैठा के लाया, माता जी फील करे कि हम लोग की फैमिली है, एंड शी इज राइट, ये हरे कृष्णा एक फैमिली है, इज स्ट्रोंगर फैमिली देन और बॉडली, जिसके हम लोग कुल बोलते हैं, हम लोग कुल की फैमिली से स्ट्रोंगर है। हम लोग शुरू में ज्वाइन में आए, हम लोग तो फैमिली छोड़ दिया रहा अपन हैं, हम लोग खाली डिवोटी जनता रहा, डिवोटी फैमिली, डिवोटी के शादी में जाओ और उस जगह नहीं जाओ, ऐसे रहा। तो रियल फैमिली इज द डिवोटीज। तो और का मांगो रहो, हम लोग एक दूसरे क्या करो, कोई डिफ़िकल्टी है तो हेल्प करो उसके, कोई डिवोटी घर बनाए जाए सबको उसके हेल्प कर दो, उसके एकदम ईजी हो जाएगी।
जिसके लिए पैसा 1,000 दे दी उसके घर बन जाएगी, हैं? राइट कि नहीं? ईजी है, बहुत ईजी है। तो वी आर वन फैमिली, एक ब्रदर प्रॉब्लम दूसरा ब्रदर हेल्प करो। वी आर वन फैमिली, ऐसे मांगो हम लोग रहो, वो रकम क्या करो एक दूसरे के। कोई के लिए खाना नहीं, उसके पूछो खाना प्रसाद है। तो वी शुड नो स्टे लाइक अ फैमिली, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोग के। क्योंकि हम लोग एक फादर है तो फैमिली का नहीं हम लोग। कृष्णा इज अ फादर, तुम्हें माता तो पिता तुम्हें हो, तो वी आर वन फैमिली। तो वी शुड प्रैक्टिस दैट लाइक दैट। तो हम लोग कोई प्रॉब्लम भी तो हम लोग को शर्मा के नहीं चाहिए, वी शुड गो टू डिवोटीज से, यही प्रॉब्लम है, तुम्हारा भाई है, कैसे करेगा, तुम मदद करेगी नहीं कुछ है? बताइए, प्रभुपाद बोले हम लोग फैमिली है, सीधा बताओ इसे, तो वो आदमी दे है। सो मेनी डिवोटीज आर लाइक दैट, सो मेनी पीपल प्रैक्टिसिंग लाइक दैट। कोई कोई नहीं करी, कोई केस में नहीं भाई हमने कहा। It has become very difficult, therefore, to raise the spiritual standards due to the present disordered values of human society. The sages of Nausori are anxious to disentangle all fallen souls, and here they are seeking the remedy from Srila Sutta Goswami. तो बोले कैसे कौन सी रेमेडी, क्वेश्चन करे सुद्ध गोस्वामी से, आगे चल के सुद्ध गोस्वामी बताइए इसके रेमेडी कौन सी है। जब हम लोग एक के संटा रही तो हम लोग के रेमेडी सेट हुई, हम लोग अलग अलग सेंटर रही, तब प्रभुपाद बोले एक तालाब में पत्थर बहाव बीच में, सेकल जाए उसके रिपल्स जाए, दूसरा ही बहाव बीच में वही जगह तो फिर रिपल्स जाए, तो दूसरा जगह बाजी तो रिपल्स वो कौन सी बोले एक दूसरे के धक्का मारी। एक के संटा रही तो हम लोग प्रॉब्लम नहीं रही, संटा एक नहीं रही तो हम लोग में अलग अलग वो हुई प्रॉब्लम रही। वी शुड हैव वन सेंटा। तब से आगे वो लोग बतावे ऋषि सुत गोस्वामी कि कैसे हम लोग सकता ये सब एकता लावे। तो फिर बोले आगे, बट देर आर मैनी वराइटीज ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड इन ऑल ऑफ देम देर आर मैनी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज which can be learned only after many years of study in their various divisions. Therefore, sages, please select the essence of all the scriptures and explain it for good of all living beings, that by such instruction their hearts may be fully satisfied. स्क्रिप्चर के बारे में भी है। व्यास जी बोले हम लोग के खाली कौन स्क्रिप्चर पढ़ी थी, प्रभुपाद जी बोले भागवत गीता, भागवत पुराण और चैतन्य चरितामृत, है कि नहीं? देर पड़ी हो तो प्रॉब्लम हो जाए बहुत। एक डिवोटी में ऑस्ट्रेलिया से रैंक करीस, तो ये डिवोटी बहुत फैमिली लड़े अपन परिवार से, वाइफ से, लड़का लड़की लोग से, सबसे लड़े, अड़कन से ऑस्ट्रेलिया चला गए, हुआ भी लड़े, वो डिवोर्स हो गया, अलग अलग रहे। लेकिन अभी वो बीमार हो गए तो रिंग कैसे संभाल लगी, बोले बहुत बीमार है प्रभु, तो बोला काम है, बोले अच्छा चैन वैन करो, बोले चैन भी नहीं कर पाता है, तो बोला कौन बीमारी है, बोले कुछ तांत्रिक वाला जना है, बोले तांत्रिक वाला हम लोग तांत्रिक कुछ नहीं है, ये तुम्हारा ऑफेंस है भाई जो औरत के लड़कन के प्रति करा तुम। हम लोग बहुत केयरफुल रहेगा, वाइफ हस्बैंड सब डिवोटी है, फैमिली डिवोटी है, हम लोग के उसके डिवोटी स्टाइल ट्रीट करे पड़ी। ये नहीं कि इसके हम औरत है इसके सीधा करी पीट के तारी उसके भी सेव करो। वे ऑल डिवोटीज, वे स्पिरिट सोल्स। तबे जो डिवोटी हम लोग जाने चाहिए, हम लोग कोई स्त्री पुरुष नहीं है, पुरुष खाली भगवान कृष्णा है, हम लोग सब स्त्रीलिंग है, जीवात्मा स्त्रीलिंग है, खाली यहाँ पे हम लोग के मेल फीमेल बॉडी है। पर जो डिवोटी हो जाओ तो वी आर ऑल सेम, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्पिरिट, वी शुड सेव each other, इवन हस्बैंड एंड वाइफ भी रहे तभी भी। कोई नहीं करता हो तो माफ करना हमें है, वी शुड सेव each other, ऑफेंस नहीं करो, ये नहीं कि खाली दूसरा डिवोटी ने ऑफेंस करो, अपन घर में भी ऑफेंस नहीं करो, नहीं तो फिर तुम सोचो तांत्रिक आएगी कुछ है। तांत्रिक कुछ नहीं है, भक्त के सेवा करो, भगवान बहुत खुशी हुए। चैतन्य महाप्रभु बोले 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग करेंगे, जीव दया,
आज हम लोग करा हरि नाम करके जी दया करा ना, राइट। वैष्णव सेवा, रामदूत वैष्णव सेवा कर दीस, सबको प्रसाद दे दीस है। और नाम में रुचि, हम लोग नाम में टेस्ट मांगे लगे। ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वैष्णव जीव दया, वैष्णव सेवा और नाम रुचि। 3 चीज़। हरदम भगवान से प्रार्थना करो, प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग भगवान के लाइक आओ, खाली देख के नहीं चल दो, कुछ प्रार्थना कुछ मांगो भगवान से। स्टोरी में बताया कि नहीं। प्रभुपाद से एक डिवोटी पूछी, बोले तुम फॉल डाउन होएगा कभी कि नहीं? बोले प्रभुपाद वुड यू फॉल डाउन एनी टाइम? नो आई विल नेवर फॉल डाउन। एक दिन प्रभुपाद जाकर डीटी के लिए प्रार्थना करता रहा, तो डिवोटी फिर के बोले प्रभुपाद व्हाट यू प्रेइंग? बोले प्रभुपाद आई एम प्रेइंग दैट आई नेवर फॉल डाउन। है तो हम लोग प्रे करें पड़ेगी, आई नेवर फॉल डाउन। हमें जीव के दया करें में मदद करो, और वैष्णव सेवा में हेल्प करो, हमें नाम में टेस्ट लगे हेल्प करो। ये सब भगवान से प्रार्थना बोले के पड़ी, नहीं बोलिए भगवान नहीं कुछ करी। कभी भी भगवान के बोले के पड़े हैं। रजिस्टर नहीं भगवान से बोले गैम्बलिंग करो, भगवान नहीं आई, गैम्बलिंग करे, बोलियो तब भगवान आई। तो हम लोग काम, ये प्रार्थना भी इम्पोर्टेंट है, बट सबसे इम्पोर्टेंट प्रार्थना है तो प्रेज करो भगवान के ना। एट द सेम टाइम हम लोग भगवान से मांगे भी है, स्पिरिचुअल चीज़ मांगो, ये नहीं कि हमें घर मिल जाए बिसाइड द सी साइड, ये सब नहीं है। हमें स्पिरिचुअली बेनिफिट दो, कि हमें जीव दया करे ताकत दो, वैष्णव सेवा करे ताकत दो। ऐसे भगवान बहुत दयालु है। कहीं डिवोटी एक फॉल भी हो जाए तो भगवान उसके फॉल माने नहीं है। उसके कोई डिवोटी फॉल हो जाए, कौन उसके फॉल माने लगे कि फॉल हो गए। हम लोग डिवोटी लोग सोचते ही फॉल हो गए, नहीं, भगवान ने उसके फॉल माने। इफ ही कंटिन्यूज ऑन दिस पाथ, ऐसे है। भगवान कोई के फॉल नहीं, भगवान लड़कन सब है। हम लोग लड़का गिर जाए, हमने बोला लड़का गिरा पड़ा रहो, उसको उठा के फिर चला के सिखाओ, समझ गया? तो भगवान हम लोग को भी से उठाते रहे, चला के सिखाते रहे। तो कोई भी डिवोटी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हम लोग उसके बगल नहीं करेंगे, हम लोग उसके और जस्ती क्या करेंगे, समझ गया? तो ही नीड्स मोर केयर देन अदर्स, वो चल नहीं पावे अभी। और हम लोग अभी हम लोग सब कोई डिवोटी बने मांगता है, तभी से कुछ हम लोग के फॉल्ट है भी, बैड हैबिट, पुराना उसके कारण है। तो उसके नहीं बोलो इसकी प्रॉब्लम। प्रॉपर जैसे एग्जाम्पल दे, बोले एक बाथरूम में ढेर डिवोटी नहावे के है, सब लाइन से जाए नहावे, तो अभी नहाए नहीं तो कुछ मैला वाला लगा कपड़ा में जरूर है ना, तो नहीं बोले मैला तुम्हें लगाया, यहाँ मैला या यहाँ मैला। अरे वो नहाए के पाथ में है, जाए सफ़ा कर ले, तुम क्या बोलता उसकी मैला लगा है। प्रोपा वैसे हम लोग बोले डिवोटी बने में चैन करता है, प्रसाद खाता है, थोड़ा प्रीच करता है, तो हम लोग लाइन में है, अब सफ़ा होएगा, तो काहे बोलो ये भी इसके फॉल्ट से निकालो। फॉल्ट नहीं निकाले हम लोग, खाली उसके अच्छा बात जो अच्छा करे वो। हम लोग एक टाइम टेम्पल में एक्सरसाइज करा रहा कि एक एक दुई जने करके बोला गया तुम उसके बारे में अच्छा बताओ और वो तुम्हारे बारे में अच्छा बताओ, करो यहाँ करेगा हम लोग। स्पेशली जो दूसरे को लाइक करने तो उसके काम उसके बारे में अच्छा बताओ। तो कौन चीज़ बेस्ट बतावे के वही बहुत अच्छा ही चयन करे। इट इज कम्स टू टेम्पल है, इज गुड, दैट्स नाइस। हरिनाम में आवे हैं, संडे की फीस बनाए, प्रसाद बना के लावे, ये अच्छा अच्छा बताओ। ये नहीं कोई खराब बात उसके तो खराब नहीं देखेगा, भगवान ने खराब देखे तो हम लोग कौन खराब देखेला है। और सब कोई प्रोसेस में है तो सब कोई मांगे इम्प्रूव करे अपने आप के, बट सर्टन हैबिट्स हम लोग के रहे। कोई हम लोग चला जाता उधर घूम के, नहीं कोई खाए हैबिट है तो एकदम प्लेट में लाद ली, बट उसकी हैबिट है बेचारा पहले से खाते ऐसे। तो वहाँ जाएगा बंगाल में ऐसे भात लाद ली पूरा, जैसे गोवर्धन हिल। लोग बहुत भात खावे हैं। हाँ तो वैसे इनके बोलो नहीं, उसके और छोड़ दो थोड़ा। समझ गया है? हाँ नहीं उसके हैबिट है अभी, तो ऐसे नहीं हैबिट चला जाए ना, ऐसे है। क्योंकि हम लोग का भी हैबिट रहे, ढेर चीज़ रहे, बोले अच्छा कस खिला ली, फिर बाद में पसंद खा नहीं पाता है, वो जस्ती ले लिया है, राइट कि नहीं? सबको एक्सपीरियंस करे वही चीज़। भूख में लगे तो बोले इतना खा लेगा मेरा है, और दो थोड़ा और राइस दो और रोटी दो,
है। तो हम लोग हैबिट से निकले कड़ा काम है ना। तो ये सजेस्ट लोग फर्स्ट क्वेश्चन के सब क्वेश्चन का आंसर करी, बट 6 क्वेश्चन है तो हम खाली फर्स्ट क्वेश्चन क्यों कराए और कहा वो क्वेश्चन पूछी थे बिकॉज पीपल लोग सब लेजी हो गए, इंटेलिजेंस नहीं है। और इंटेलिजेंस कैसे आए, जब हम लोग कृष्णा भक्ति करेगा, कृष्णा बोले सर्वसाचाम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञापन, फ्रॉम मी कम्स इंटेलिजेंस, रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस। तो भगवान से आवे है सब हैं। तो हम लोग भगवान के पूजा करेगा, भगवान नाम लेगा, स्पेशली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये नाम लेवे से भगवान के पूजा हो जाए, ये नाम लेवे से ही पूजा हो जाए, अलग से कोई पूजा करे काम नहीं है। ये नाम लेवे से भगवान की पूजा हो जाए। और इवन आरती करे कोई तो जो हम लोग देखता है वो लोग के उतने बेनिफिट मिले, जो आरती करे और जो देखे उसके सेम बेनिफिट मिले ऐसे। तो हम लोग बहुत उन्हें करो कि वो डिस्टर्ब हमें मिले आरती करेंगे ऐसे ना, मोर क्वालिफाइड उसके देव करे के हैं रेडी हो गावे इतना दूर से। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग रिवाइज कर लेना 6 क्वेश्चन के जाके, हम एक क्वेश्चन बताया अभी। बट मेन चीज़ है कि सही लोग जो है वो लोग दूसरे के बेनिफिट, और वही चीज़ प्रभुपाद मांगे हम लोग भी दूसरे के बेनिफिट लाओ, और उससे लास्ट पहले अपने आप पहले उद्धार अपन सार्थक करो जीवन ना। सार्थक करने मतलब हम लोग 16 राउंड चैन कर लो और 4 नियम पालन करो, एकादशी व्रत करो, तब हम लोग तब प्रचार भी करें, ठीक है कि नहीं। तब उसमें वो रही जान रही प्रचार में भी, मतलब जान नहीं रही प्रचार में कुछ, सुन के चलते रही है। ठीक है, एनी क्वेश्चन माता जी, एनी क्वेश्चन? टाइम हो गया, 5 हो गया, पूछो कोई सवाल बच्चों। माता जी आपके सवाल है कुछ? नहीं है? ठीक है, तो हम लोग आरती करेंगे। सेट ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री